Morning everyone. Welcome to your TSN English class. Today we'll start the third video of this chapter number 5, Should Wizard Hit Mommy? From your class 12. This chapter, today we'll start your chapter from page number 51 of your book Vistas. So, let's start the chapter. A little river over the creek, and there will be the wizard's house. And that's the way Rosa's skunk went, and pretty soon he came to a little white house, and he rapped on the door. Jack rapped on the window sill, and under the covers Joe's tall figure clenched in an infantile thrill, and then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat and said, what's watcher want? You smell awful. The wizard voice was one of Jack's own favorite effects. He did it by scrouching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for interval roomy. He felt being an old man suited him. I know it, Rosa skunk, and all little animals run away from me. The enormous wise owl said you could help me. So here in this paragraph, students, what's going on? That earlier we have read that there due to the smell, the Rosa skunk, every creature over there, they don't want to came near to that Roser because the smell is very pungent, or you can say that not a bearable kind of a smell. So a little river is called creek. So वो क्या कह रहा है? A little river over the creek. वो little river को क्या कह रहा है? It's called creek. Generally when there were like American stories in that, so this word creek is used for American stories and create fiction. And when we talked about the real meaning of this word creek, so that is like कहीं पे अकड़ा ना जाना or kind of a swelling or pain due to the jerk or like that. So over the creek will come the house of wizard. So जैसे ही वो creek आता है किसके wizard के घर पे, so there will be the wizard's house, and that's why the Rosa skunk went, and Rosa skunk followed the same path. So जो path वो follow करता है, Rosa skunk भी same path को follow करता है. Pretty soon he came to a little white house. और जैसे ही वो दोनों एक ही पाथ को फॉलो करते हैं, soon he was in front of a little white house. Then he knocked. He came to a little white house and then he rapped on the door. So he came to or he rapped to a little door means here. So pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. That means then he knocked at the door. So rapped here means knocked at the door. Jack rapped on the window sill and Jack knocked at the sill. Window sill मतलब विंडो के साइड में वो जो स्पेस बनी हुई होती है जहाँ पे जनरली लोग अपना कुछ भी सामान वगैरह कैरी कर लेते रख देते हैं, सॉरी. So वो प्लेस विंडो सिल होती है. So that place, and under the covers Joe tall figure clenched in N, and when Jack knocked at the window sill and Joe tall body clenched in thrill, और जो कि जब tall body पूरी तरह thrill से भर जाती है in thrill as if she was a small child. So क्या लगता है उसे जैसे वो एक small child है. And then a tiny little old man came out, and then appeared a little old man who had a long white beard, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी long white दाढ़ी होती है, and was wearing a conical shaped blue hat on his head. और जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो उसने ऐसे conical cone shaped जो head है वो पहनी हुई है, that is blue color, the color of the head is like blue. So what's, so वो क्या पूछते हैं कि what is, what you want, You are smelling very bad. और वो उससे क्या कहता है, तुम्हारे में से बहुत गंदी बदबू आ रही है. Jack loved to imitate the wizard voice. और जैक को क्या लगता है विजर्ड की वॉइस. So the wizard voice was one of Jack's own favorite effects. विजर्ड की वॉइस जैक को कैसी लगती है, बहुत ही फेवरेट. Scrouching up his face and made his eyes somehow look miserable. And scrouching up his face.
So here in this paragraph, Jack like loved to imitate the wizard voice and scrouching up his face and made his eyes somehow look miserable, which caused tears in his eyes. And he realized that being an old man looked nice on him. और उसको suddenly लगता है कि ऐसा old man की तरह pretend करना उसके ऊपर suit कर रहा है. So basically it suited him. I know it, Roser skunk said, and all the little animals run away from me. I know it, Roser skunk said. तो Roser skunk क्या कहते हैं? Yes, मुझे ये सब पता है, and because of it all tiny animals maintain a good distance from me. और मुझे पता है कि मेरे में से बदबू आती है, because सारे animals में से मेरे में से स्मेल आने के कारण आई नो दैट एनिमल टाइनी एनिमल्स मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम मी एंड आई वॉज एडवाइज्ड बाय ओल्ड वाइज आउल टू मीट यू फॉर हेल्प. और मैं आपके यहाँ इसलिए आया हूँ बिकॉज मुझे एक ओल्ड वाइज आउल ने एडवाइस करी है. दैट एनॉर्मस वाइज आउल एडवाइज्ड मी टू take help from you and to meet you for help. Well, maybe come on in. Don't get too close. Now inside Joe, there were all these magic things all jumped together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning body. So here in this paragraph, well I can. तो वो क्या कह रहा है? Well maybe means well I can. Let's go inside. So come on in, don't get too close. So चलो हम अंदर चलते हैं. Don't walk too close. ज़्यादा पास में walk नहीं करनी है. Now inside Joe there were all these magic things. And now inside Joe, so he found all the magic things and jumbled together like in a big dusty heap because the wizard hired no maid. और वो वहाँ पे देखता है कि बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है बिकॉज द विजर्ड है वो did not have any cleaning lady or the wizard hired no maid here. So why? Because he was a wizard and a very old man. तो पूछते हैं कि why ऐसा क्यों है? Why? Because he was not only a wizard but also had a very old. So वो एक wizard ही नहीं है बल्कि साथ साथ में या वो एक जादूगर ही नहीं, साथ में वो बहुत ही बूढ़ा जादूगर भी है. So will he die? क्या वो मर जाएगा? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं. नो विजर्ड डोंट डाई. वेल ही rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roser skunk what he wanted to smell like. Roser skunk thought and said roses. Yes, good, Joe said smugly. Jack fixed her with a trance like gaze and chanted in the wizard's elderly irritable voice. So here in this line or paragraph, so वो अपने फादर से क्या पूछता है कि इज ही इज गोइंग टू डाई. तो क्या वो विजर्ड जब इतना बूढ़ा है जादूगर तो क्या वो मर जाएगा? No, wizards don't die. So basically wizards are like immortal. And well, he searched of every corner, found an old stick where he was calling his magic wand. और वो वहाँ से एक फटाफट से एक स्टिक उठाते हैं उसके फादर और बोलते हैं कि इस तरह के उसके पास एक मैजिक वैंड होती है विजर्ड के पास. एंड आस्क्ड रोजर स्कंक. सो वो जब रोजर स्कंक उसके वहाँ आता है हेल्प के लिए, जब उसे आउल सजेस्ट करता है तो वो पूछता है विजर्ड उससे कि तुम बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो, कौन सी स्मेल तुम्हें अच्छी लगती है. तो विच स्मेल वुड ही प्रेफर टू स्मेल बिकॉज अर्लियर ही यूज टू स्मेल वेरी बैड. दैट इज वाई ही wants his opinion that which smell do you want from your body. So Roser thought long and finally said. So Roser जो है वो तो बहुत ज़्यादा सोचता है, फिर क्या बोलता है? Roses. कि मुझे किसकी स्मेल पसंद है? रोजेज. येस, गुड, जो सेड स्मगली. सो योर जो है जो इज फीलिंग सैड एंड फीलिंग रिलैक्स्ड एंड जैक स्टार्टेड हर इन मैनर एज इफ he was taking a trance and chanted in wizard elderly irritable voice. And here is like this is abracadabra, hocus poo, rosa skunk, how do you do, roses, boses, pull and ear, rosa skunk, you never fear, bingo. So here there is a kind of mantra here जो कि वो जो है wizard वो बोलता है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, या उसकी जो स्मेल है, बॉडी की जो स्मेल है
वो स्मेल एक अच्छी स्मेल में बदल जाए. सो इस तरीके का विजर्ड उधर ट्राई करता है. एंड स्टूडेंट्स, योर इन दिस चैप्टर, दिस इज अ काइंड ऑफ अ चैप्टर वेयर यू कैन इजीली, if you are like, you have to read this chapter 2 or 3 times so that you can understand it in a better way. So here I have already told you about this paragraph, that when I will recommend to that Rosa skunk ki you have, if you need help, so you should go to the wizard and he will help you somehow. So that old wise owl to meet you for help, only wizard is there. and जब वो wizard के पास जाता है तो वो उसकी appearance पे बोलता है कि wizard क्या मरते हैं नहीं मरते हैं. and finally वो उससे बोलता है कि मुझे कैसी smell पसंद है. और wizard जो है वो एक कोई मंत्र सा, या आप कह लो उनका जो जादूगर लोग जो पढ़ते हैं उस टाइप का कुछ वो पढ़ता है. So let's move on to next page. He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing his eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure to cocktail parties. And all of a sudden he whispered, the whole inside of Wizard House was full of smell of roses, roses, roses. Roser Fish cried, and the wizard said, very cranky, that all be 7 pennies. Daddy, what Roser Skunk? You said Roser Fish. Yes, Skunk, you said Roser Fish. Wasn't that silly, very silly of your stupid old daddy? Where was I? Well, you know about the pennies. So here in this paragraph, students, he paused as a rapt expression widened. So because जो फादर है वो बच्चों को स्टोरी सुना रहा है तो वो 2 सेकंड के लिए रुक जाता है. एंड स्टोरी में रुकते ही क्या होता है, सो व्हेन ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट एज ही स्पॉटेड अ रेप्ट एक्सप्रेशन फॉर्मिंग एट हिज डॉटर्स नॉस्ट्रल, तब वो क्या देखता है कि उसकी डॉटर जो है कोई एक अजीब सा एक्सप्रेशन उसकी नॉस्ट्रल पे एंड फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड डाउन, और वो अपनी आईब्रोज को अप एंड डाउन कर रही है. एंड हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइसलेस स्माइल, और उसका लोअर लिप जो है वाइज नॉइसलेस स्माइल आ रही है. एंड इट वॉज एन एक्सप्रेशन which surprised Jack as it reminded him of his wife forging pleasure at cocktail parties. और ये एक्सप्रेशन उसको याद आता है कि जब जैक जो है उसे अपनी वाइफ के बारे में याद आता है कि किस तरह उसकी वाइफ जो है इस तरीके का ही एक्सप्रेशन कॉकटेल पार्टीज में देती है. एंड सडनली ही सेड इन अ लो टोन, द एंटायर आइडिया ऑफ विजर्ड हाउस filled with scent of roses, roses. और सडनली उसे याद आता है कि मेरे को स्टोरी आगे कंटिन्यू करनी है, और फिर वो बोलता है कि विजर्ड का हाउस जो है वो पूरा रोजेस की स्मेल से फिल हो गया था. रोजर फिश क्राइड एंड रोजर फिश, अब वो क्या बोलता है, सो द हाउस इज फुल ऑफ लाइक रोजेस स्मेल एंड रोजर फिश क्राइड एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट ऑल विल बी 7 pennies. और फिर वो बोलता है रोजर फिश ने बोला एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी, और विजर्ड ने बहुत ही क्रैंकी मैनर में बोला पे मी 7 pennies, और दैट ऑल विल बी 7 pennies, कि तुम्हें मैंने इतनी अच्छी स्मेल दी है, तुम इतनी बैड स्मेल करते थे, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी स्मेल दी है, एंड दैट स्मेल कॉस्ट लाइक 7 pennies. सो डैडी, सो जो है वो अपने डैडी को बोलता है, जैक एंड जो, डैडी व्हाट इट रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश. तो वो अपने डैडी को मेंशन करता है कि आप स्टोरी में रोजर स्कंक को सुना रहे थे आज, और आज आपने वापस रोजर फिश बोल दिया है. यस स्कंक. तो डैडी बोलते हैं ओके, let me correct myself, skunk is the right word, you said roser fish, it seemed silly. तो क्या बोलता है, आपने रोजर फिश कहा था, ये सिली सी बात है, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी. सो बहुत ही सिली है. सो यू ओल्ड डैडी डज सच सिली मिस्टेक क्वाइट ऑफन. तो वो क्या कह रहा है बच्चा कि मेरे प्यारे बूढ़े पिता, आपने जो मिस्टेक करी बहुत ही सिली सी मिस्टेक है. सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, वेल यू नो अबाउट द पेनीज. और अब फादर क्या बोलते हैं, ओके ओके, मैं तुम्हें कहाँ पर था, मैं तुम्हें कहाँ स्टोरी सुना रहा था, तुम्हें तो अब पेनीज के बारे में पता चल गया है कि 7 pennies उसने बोला था. सो ही सेड पे मी 7 pennies फॉर this that I have convert you, or I have given you such a good smell of roses. Students,
Thank you all. We'll continue the next remaining paragraphs or remaining part of this chapter in our next video. Thank you all.